Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So today we will study about the internal and external balance approach through the Swan diagram. So talking about the internal balance, it is the full employment along with stable level of prices. The internal balance curve shows the full employment along with the stable level of prices, and the external balance is for the equilibrium in BOP. Now to achieve the above objectives, countries have the following three policies. First is the expenditure changing or demand policies. Second is the expenditure switching policies. And third is the direct control. Expenditure changing policies, it includes the fiscal and the monetary policy. It refers to change in the fiscal and monetary policy which aims to influence the level of aggregate demand in the economy. Expenditure switching policy is related to BOP, that is changes in the exchange rate. It refers to policies such as devaluation and revaluation of the exchange rate which attempts to influence the composition of spending between domestic and foreign goods. Next is the direct control, and it includes the tariff, quotas, etc., and it is used in case the other policies proves to be ineffective. Now we will understand the internal and external balance approach with the help of the Swan diagram. The Swan diagram basically examines how a country can simultaneously attain the internal and the external balance with the two policies. And what are those two policies? That is the expenditure changing policy and the expenditure switching policy. This concept was basically conceptualized by Trevor Swan in the year 1955. This diagram have some assumptions. First is there is zero international capital flow, so that the BOP is equal to the country's trade balance, and it also assumes that the prices remain constant until the full employment is reached. So this is the external and internal balance model. The downward sloping curve is the internal balance graph. The upward sloping curve is the external balance graph. On the x-axis, we have shown the domestic absorption. On the y-axis, we have shown the real exchange rate. The internal balance shows the combination of real exchange rate and domestic absorption, that is full employment at the stable price level. IB is downward sloping, and why it is downward sloping? Because it shows that the fall in the real exchange rate, that is the appreciation, will increase the import and reduce export. To maintain full employment, it is necessary to increase the domestic expenditure or absorption. Therefore, IB is negative sloping. To the right of IB, that is here, there are inflationary pushes, and to the left is the unemployment. Now looking at the EB curve, EB, that is external balance graph, is the upward sloping, as it shows that increase in the exchange rate, that is depreciation, will increase the export and reduce import. To prevent the external balance curve moving towards the surplus, that is here, it is necessary to increase the domestic exports to induce imports to rise to keep trade balance in equilibrium. To the right of EB curve, we have BOP deficit, and to the left of EB curve, we have BOP surplus. Only at point E, where IB and EB intersects, the economy is in equilibrium. That is where the IB curve and EB curve intersects. That is at point E, the economy will be in equilibrium. Now we will look at the assignment problem in Swan diagram. Assignment problem basically ये बताता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैक टू इक्विलिब्रियम पहुँचे. If the two instruments are exchange rate and fiscal policy, the intuitive assignment is to use exchange rate to achieve external balance and fiscal policy to achieve the internal balance. हमारे पास दो exchange rate है, एक exchange switching policy, एक exchange रेट एंड फिजिकल पॉलिसी. अब हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे? उनके पास यही है कि अगर उनको एक्सटर्नल बैलेंस अचीव करना है तो वो एक्सचेंज रेट की पॉलिसी यूज़ करेंगे, एंड अगर उनको इंटरनल बैलेंस अटेन करना है तो वो फिजिकल पॉलिसी यूज़ करेंगे. Whether this is the correct assignment will depend on the relative impact of the two instruments on the two targets. अब जो हमारा स्वान डायग्राम है वो 4 जोन्स में बटा होता है. फर्स्ट, जहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन एंड सरप्लस होता है. सेकंड, इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट. थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेफिसिट. फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सरप्लस. रियल एक्सचेंज रेट में अगर हम बात करें, इफ वी मूव वर्टिकली अपवर्ड्स, दैट इज अ डेप्रिसिएशन. इन दिस द एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज एंड इम्पोर्ट विल डिक्रीज, एंड
downwards is the appreciation, which is vice versa of depreciation. And on x-axis, the domestic absorption shows that on the right hand side is the expansionary policy and on the left hand side is the contractionary policy. Now we will assume that we are in zone 3. हम लोग assume करते हैं कि ये हमारी कंट्री ए है और वो जोन 3 में है, दैट इज़ वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेफिसिट से कन्फ्रंट कर रही है. अब व्हेन इट विल मूव वर्टिकली अपवर्ड्स, दैट इज़ इट इज़ डेप्रिसिएशन, दैट इज़ इट विल मूव टुवर्ड्स ईबी कर्व. नाउ अब वो ईबी कर्व में तो पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगानी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट क्या लगाएगी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएगी, जिसकी वजह से अब हम लोग ईबी कर्व से कहाँ आ जाएंगे, आईबी कर्व में. पर आईबी कर्व में आने की वजह से क्या हुआ, नाउ वी हैव लॉस्ट द ईबी कर्व. अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फिर से डेप्रिसिएशन की पॉलिसी लगानी पड़ेगी. जब डेप्रिसिएशन होगा, अगेन द कंट्री विल मूव टुवर्ड्स ईबी कर्व. जब यहाँ आएगी, अब हम लोग ने क्या किया, आईबी कर्व हमारा लॉस हो गया. अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाएगी गवर्नमेंट, ताकि हम लोग बैक टू ईबी कर्व आए. अब आईबी कर्व में तो आ गए, पर ईबी कर्व फिर चला गया. फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, एप्रिसिएशन की पॉलिसी लगाएगी. नाउ वी विल मूव बैक टू द ईबी कर्व. ऐसे करते करते, दिस इज अ कन्वर्जेंट पॉलिसी. ऐसे करते करते इवेंचुअली, ड्यू टू रिपीटेड यूजेस ऑफ दीज, वी विल इवेंचुअली रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन. एंड अगर हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम राइट है, तो इवेंचुअली रिपीटेड यूज़, ये सारी पॉलिसीज़ का यूज़ करके कन्वर्जेंटली हमारी इकोनॉमी क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगी. सो दिस वाज द असाइनमेंट प्रॉब्लम विच वाज एक्सप्लेन थ्रू द स्वान डायग्राम. आई होप you have understood the video. If you like it, share and subscribe. Thank you.